Okay. In equilibrium, what happens exactly? थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं what happens in equilibrium, and then basically physical chemistry का chapter है and you have to do a bit of numericals. So before understanding how to do the numericals, you also have to understand what exactly is happening in equilibrium, okay, and what we are trying to quantify here. Now, if I start with the sequence of the chapters in your NCERT, it is very well defined. थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता तो और अच्छा होता. There's one chapter in class 12 that is kinetics, chemical kinetics. Okay, if chemical kinetics was before equilibrium, it would have been even better. But still, I mean, फिर chapter 11, sorry, 12th class के लिए कोई chapter बचता नहीं है ऐसे, है ना? So थोड़ा सा kinetics यहाँ पे इस्तेमाल होता है, chemical kinetics, but overall the sequence is very fine. Starting में we understood the language of chemistry, right? Language of chemistry in the first chapter. Chapter 1 was just some introduction to the language of chemistry in terms of moles. हम किस तरह से quantify करते चीजों की, क्या definitions है चीजों की. In chapter 2 we understood the atomic structure. Now, after atomic structure, we understood that we have different types of atoms and they have some pattern in reactions. Chapter 2, chapter 3 में हमने क्या देखा? We have different types of atoms and elements and they have some properties which are periodic. That was in periodicity. And in chapter 4, once these atoms which have some periodicity and they react in similar manner, when they will react, they are going to form molecules. And हम लोगों ने यहाँ पे देखा molecular structure. We saw molecular structure. Now, all of these chapters, not the first one, rather second, third, and fourth, all of these, they dealt with elements and molecules and atoms. Okay, so all of these were micro. We were learning micro things. Okay, छोटी चीजें. Then in chapter, and obviously the whole real world that we interact with, it is not micro. We have everything in macro. जैसे हम एक molecule water का कभी उससे interaction हमारा होगा नहीं. We will have tons of molecules of water. Okay, we will have tons of atoms or metal, sodium के metals होंगे. So we'll have tons of atoms or we will have tons of molecules of a particular compound, and those aspect is macro aspect. So जो chapter 5 था आपका, that has been deleted, that is states of matter, right? States of matter था, that is being deleted. And जब होना चाहिए था, थोड़ा कुछ तो इससे आपको सीखने को मिलता है states of matter में. And in states of matter, we generally dealt with the gaseous state. And there is one equation which is still important, even if we have not done, even if it has been cancelled. There is an equation PV is equal to nRT, which is still important, and that you have to learn. Okay, what is P? Pressure into volume is equal to the number of moles into the red box, into the universal gas constant, into the temperature. Okay, nRT. Then in chapter 6, we dealt with thermodynamics. In thermodynamics, what happens? Whenever we are talking about the different type of changes that can happen with macro systems. और उसके बाद हमने macroscopic properties भी देखा. That was pressure, volume, and temperature. These are the different macroscopic properties by which we can define a particular system. And chapter 6 in thermodynamics, we were more concerned with the change that is happening. ठीक है? और कितना अच्छा sequence है. Chapter 7 है आपके पास equilibrium. What is chapter 7? What happens after change? Change के बाद जो when nothing happens, right? Nothing का मतलब ये नहीं कि like there is no process happening, but rather we are not seeing any change in the macroscopic properties, that is equilibrium. That is equilibrium. Okay, so this is the sequence of the chapter. The book 1 is completely like this. तो उन्होंने sequence बिल्कुल बनाया. यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा part kinetics का लगेगा. Okay, there will be a small part of kinetics that will be there, but overall the whole sequence of chapter is very good. अब आप लोग समझ में आएगा what happens after change. What happens after change? Okay, now let us first of all see equilibrium. Equilibrium आपको दो तरीके से पढ़ना है. There is physical equilibrium and chemical equilibrium also. Okay, so see, there are two types of equilibrium. Physical equilibrium is a very small part. Mainly आपको chemical equilibrium and उसके बाद ionic equilibrium पढ़ना है. That is a part of chemical equilibrium. You have physical equilibrium. Okay, in physical equilibrium you can have liquid, which is in equilibrium with vapor. You can also have solid, which is in equilibrium with
liquid. Then also you can have solute, which is solid in state, and solution, or rather I can say solute, which is in aqueous medium. ये mix हो चुका है अब, right? This is in the solution now. So these are the different type of physical equilibrium that you can have. ठीक है? अब पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं. Okay? What exactly happens? Generally equilibrium ने क्या कहा? A से B जाने में आपको कोई प्रोसेस लगेगा. What is A? आपके पास there are some reactants. Process is thermodynamics में हमने पढ़ा. B बन जाएगा and this B state ही कहाँ पे आएगा? Equilibrium में आएगा. Okay? This is there in equilibrium. When nothing happens. When nothing happens का मतलब there is no visible change in the macroscopic quantity. तो let us start with liquid and vapor equilibrium. यहाँ पे क्या चीज सेम रहेगा? इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं. ठीक है? लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी सेम हियर. ठीक है, जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम आए देयर शुड बी समथिंग व्हिच इज कांस्टेंट, है ना. कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है. देयर शुड बी समथिंग व्हिच इज नॉट चेंज. देयर शुड बी समथिंग व्हिच इज नॉट चेंज. नाउ लेट अस सपोज आई हैव समथिंग लाइक दिस एंड आई हैव वाटर. नाउ whenever there is water you will also have vapors above it, water vapors, है ना. तभी तो अगर आप लेट रखिए रात भर के लिए and you uncover the lid, then in the lid you will see some water droplets. Where are the water droplets coming from? They are coming because water is constantly getting evaporated. ठीक है, constantly getting evaporated. Now if I have this type of vessel, है ना, एक सेकंड इसको हम छोड़ दूसरा एग्जांपल यहाँ से ऐसे ले सकते हैं. Let us suppose you have okay, and then you have the vapors above like this, and I changed something. What did I change? I changed the volume. Okay, I changed the volume, I increased the volume. Water is still the same. ठीक है. Now these water vapors, they have a large area to wander about, correct? And since they have got a large area to wander about, more and more vaporization can happen. Yes or no, please tell me. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है. Now please see, these vapors are there and these vapor they will apply pressure on the walls of the container और उस pressure को बोलते हैं vapor pressure. Okay, we call that vapor pressure. So what I have done, I have increased the volume. ठीक है. अब एक बात बताइए, when you have a small volume, at that time if you have same number of moles, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे भी कितना था, 100 moles of gas. ठीक है. And instantly if I increase the volume, instantly what I am doing, I am increasing the volume. तो instantly जब increase करेंगे तो अभी भी आपके पास क्या है, 100 moles of gas है, right? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है because vaporization is going to increase, the rate of vaporization is going to increase धीरे धीरे करके, right? Instantly क्या होगा, we have still the 100 moles of gas but volume has increased. तो हम PV is equal to nRT लगाते हैं, right? P is equal to nRT upon V. P is equal to nRT upon V. ठीक है. This V is small. यहाँ पे V क्या है, large है, right? V is large here. So tell me about the pressure. Where the pressure will be high, P1 या P2? Which will be high? Which pressure will be high? nRT तो same है. Here we have small volume. In P2 we have large volume. So where is the pressure high, P1 or P2? हाँ जी बताएं. Yes, Hiba, correct.
ट्राई टू पुट अप अ नंबर एंड सी ना, ठीक है, ट्राई टू पुट अप अ नंबर। एनआरटी को आप एक कांस्टेंट मान लीजिए, है ना, एनआरटी को आप मान लीजिए, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है, कांस्टेंट दोनों सेम है, तो आप दोनों को सेम मानना है बस, ठीक है, इट डजंट मैटर कि क्या है एग्जैक्ट वैल्यू। वी को आप स्मॉल और लार्ज दे लीजिए, वी को आप यहाँ पे 10 ले लीजिए, वी को यहाँ पे 20 ले। जिन लोगों को नहीं समझ में आता ना न्यूमेरिकल से, मतलब जिनको से वर्ड से समझ में नहीं आता, वो इस तरह से नंबर पुट कर लिया करे, ओके। वी स्मॉल 10, वी लार्ज 20। कहाँ पे पी ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा, अब बताइए। वंस यू हैव पुट द नंबर यू कैन क्वांटिफाई इट वेरी क्विकली, नाउ टेल मी। बाकी तो आना ही चाहिए आप लोग को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख के। व्हाट अबाउट अदर्स, किसी को नहीं आ रहा क्या? ओनली हिबान ने आंसर किया। फहद, देवांगी, तारीफ, अब्दुल्ला, प्लीज आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी हायर, P1 और P2? Yes, correct. P1 is going to be higher, right? P1 is going to be higher than P2। जैसे ही हमने इंक्रीज किया उस टाइम पे, जैसे ही हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया उस टाइम पे, बट धीरे धीरे क्या होगा, हियर द इवेपोरेशन विल स्टार्ट टू इंक्रीज, राइट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल स्टार्ट टू, और भी मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? व्हाई इज इवेपोरेशन हैपनिंग? बिकॉज यहाँ पे सैचुरेटेड हो चुका था, राइट। हियर वी हैड the maximum number of moles of gases that should be present in a particular volume. Now, as we have increased the volume, we can have more gas, right? This volume can accommodate more number of moles of gases. That is why more evaporation will take place. More evaporation will take place. That means the number of moles of gas will increase, and the number of moles of gas will increase, and that is why the vapor pressure will also slowly increase. And vapor pressure increase करके क्या होगा, देखिए what happens actually। graphical representation भी समझिएगा इसका प्लीज। Here we are talking about the vapor pressure, ठीक है। So vapor pressure initially ऐसे था, there is nothing happening, है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे vapor pressure ऐसे ही है। But instantly I increase the volume. As soon as I will increase the volume, what is going to happen? P2 कम हो गया था, right? As soon as I increase the volume, the pressure got decreased, pressure decrease हो गया अचानक से, और फिर धीरे 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 this is going to increase और फिर ये सेम वेपर प्रेशर है वहां तक पहुंच के that is going to get constant, okay। So this is the, यहां से यहां तक this is the change happening। ये change is human induced, है ना। जैसे ही हमने क्या किया, I increase the volume, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर, तो ह्यूमन की वजह से ये चेंज आया, राइट, टिल हियर। और ये इंक्रीज, दिस इज बाय सिस्टम, चेंज बाय सिस्टम, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अ न्यू वर्डिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी आपके पास सवाल भी आए और उसमें कुछ चेंज हो रहा हो ना, इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन यू हैव टू थिंक इन दीस टर्म्स कि ह्यूमन ने क्या चेंज किया, फिर उसके लिए सिस्टम क्या चेंज कर रहा है। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, This sir. is clear. Human change and the change by system. What about others? Hiba, Fahad. हिबा आपको समझ में आया? Yes, Hiba. Did you understand this concept of change that is by human and the change that system is doing on itself? No. Yes. I can't hear you, Hiba. Can you not turn your mic on? Okay. Okay. If you are answering them the message, I'm not getting anything in the chat box also. Chali. Next thing is, there's actually a question in your NCERT. If you look, I think this is the first question in NCERT. ठीक है, ये सवाल है। A liquid is in equilibrium with its vapor pressure, with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. The volume of the container is suddenly increased. What is the initial effect on the change? What is the initial effect of the change on vapor pressure? है ना, change का effect क्या होगा vapor pressure में? तो we'll say vapor pressure decreases.
हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली, है ना। यहाँ पे एक और चीज देखिए, there are two things that constantly happen whenever you have a liquid. Liquid ke molecules, the top of the liquid molecules, they get converted to vapors, okay, and then we have vapors, right? When vapor comes into contact with the liquid molecules, then the liquid absorbs it also, okay. So there are two things that is happening. There is evaporation, and when this liquid vapor, it comes into contact with water, it condenses. So there is condensation, okay. Both of these things are happening. So when the rate of evaporation is equal to the rate of condensation, at this point we say that there is an equilibrium. The rate of evaporation and when rate of condensation, तभी तो क्या होगा, vapor pressure is not going to change. अब I'm starting to question you something, try to answer, ठीक है ना. If the rate of evaporation is greater than rate of condensation, तब क्या होगा, vapor pressure increase होगा, B decrease होगा, या C same रहेगा. Vapor pressure is dependent on the number of vapor molecules, right? तो बताइए क्या होगा, if the rate of evaporation or rate of condensation से ज्यादा है, अगर rate of evaporation is greater than rate of condensation, then what is going to happen? Vapor pressure or the number of moles of vapor, it is going to increase, decrease or remain same. ये आंसर कीजिए please. Yes, correct, है ना. तो रेट ऑफ एवापोरेशन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा. नाउ बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के. Vapor pressure is a macroscopic quantity, yes or no, please tell me guys. Correct है. Vapor pressure is what? It is a macroscopic quantity that we can measure. हाँ ना please बोलेंगे. Yes or no? Nice. Now vapor pressure is still changing, correct? Yes or no, please tell me. हाँ जी, vapor pressure change हो रहा है. When rate of evaporation is greater than rate of condensation, तो vapor pressure क्या हो रहा है, increase कर रहा है. That means it is changing, correct? Yes, sir. Then we will say, is it equilibrium till now? Then you will say, no, it is not equilibrium. Why? Because equilibrium में कुछ नहीं होता, right? Equilibrium में जो चीज यहाँ पे हमने constant रखनी चाहिए है, तब वो constant कब होगा, vapor pressure, it will remain constant, even though evaporation is still happening and condensation is also happening, but the rate of evaporation and condensation is what, same. For example, अगर यहाँ से if the number of moles that is getting evaporated per second is 5 moles, ठीक है, 5 मोल पर सेकंड क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो कंडेंस भी कितना हो जा रहा है, 5 मोल पर सेकंड, राइट. सो एट दिस पॉइंट वी विल से दैट व्हाट इज देयर, वी विल से दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड. इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. है ना. और सेम चीज अगर मान लीजिए यू हैव इवेपोरेशन का जो रेट है that is less than the rate of condensation, तो इसमें क्या होगा, more molecules are going to condense and that is why the vapor pressure is going to decrease. Whenever there is something increasing or decreasing, we will say equilibrium has not been established. Equilibrium will be only established when the rates will become equal, है ना. rate equal होगा तो कोई एक चीज वहां पे constant हो जाएगा. For example, अच्छा यहाँ पे how do rates of evaporation and condensation change initially, तो rate of evaporation क्या होगा, increase कर जाएगा, right. Rate of evaporation increase करेगा और condensation उस टाइम क्या होगा, decrease हो जाएगा. Okay, what happens when equilibrium is restored finally and what will be the final vapor pressure? So final vapor pressure will be same as the initial vapor pressure. ठीक है. What happens, so vapor pressure slowly it increases and it reaches the initial vapor pressure. उस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं जो हमने ग्राफ बनाया था. It slowly increases and it reaches the same vapor pressure. Okay, all of you understood this? Yes or no, please tell me. ठीक है. Now, important point जो यहाँ पे आपको देखना है वो ये देखना है कि जैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, वैसे you are going to get something that is going to be constant. Okay, there is something that is going to be constant in all of these things. जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा and there will be rates which will be equal. Rates क्या होगा, equal रहेगा and there will be some constant. ठीक है, rates equal रहेंगे and there will be something which is going to constant. कंसंट्रेशन सेम रहेगा नहीं, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम रहेगा नहीं. वेपर प्रेशर सेम रहेगा, नो.
वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं बोल सकते कि वेपर प्रेशर एक ही जैसा रह रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो कांस्टेंट ना, ये ध्यान रखिएगा, रेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा, कंसंट्रेशन की बात जब आएगी तो हम बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट थिंग, सोल्यूट व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सोल्यूट which is in aqueous state. Okay, solute which is in aqueous state. Now, what are the things that is happening when solute is getting, solute जब solid से aqueous में जा रहा है, तो इस process को क्या बोलेंगे? This is dissolution, dissolve हो रहा है, right? And when solute is getting converted to solute, it is known as what? This is known as, solute is getting converted to solute, this is known as what? Precipitation, no? This is precipitation, PPT बनने को precipitation बोलते हैं ना, हाँ, precipitation है ना। एक और नाम होता है इसका क्या? क्रिस्टलाइजेशन। Okay, this is what? Crystallization. Now, when the rate of dissolution and the rate of crystallization are going to be equal, उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे? Then we are going to say the rate of then we are going to say then equilibrium is established. ठीक है, जब rate of dissolution और rate of crystallization same हो जाएगा तब equilibrium आ जाएगा, and when it is going to be, when both of these rates are going to same, then the concentration is going to, concentration is constant, तब concentration क्या हो जाएगा? Constant हो जाएगा, right? Because आप ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, I have added sugar, शुगर तो आपने ऐड कर दिया, बट वी हैव नॉट started to mix it. Now धीरे धीरे slowly what is going to happen, sugar का कुछ वहां पे क्या होगा, you will have some solid sugar and those solid sugar will be slowly dissolving into the water, right? So at that time we'll say the rate of dissolution is higher than the rate of crystallization. Okay, the rate of dissolution is higher than the rate of crystallization. Slowly when it is going to completely dissolve तो उसमें क्या होगा, rate of dissolution भी बहुत कम हो जाएगा and rate of crystallization भी उसमें बहुत कम हो जाएगा. Okay, and both of them are going to be equal and at that time we will say that equilibrium has been established. अब उसके बाद concentration में कोई change नहीं आने वाला. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Once it is dissolved and there is no change happening, so concentration mein there will be no change, and at that time we are going to say that rate of dissolution is equal to rate of crystallization. Is this clear? Yes or no? Please tell me. हाँ जी बताएं, क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now, see next. ये तो आपके पास फिजिकल चेंजेस थे, अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस में. ओके, व्हेन यू हैव केमिकल चेंज दैट इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन. ओके, दैट इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन. नाउ देयर इज अ स्मॉल हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन. हम I don't actually remember the particular reaction जहां से equilibrium start हुआ था. Okay, just let me get that reaction. But I know the context इसका ये जानते हैं, like you won't even believe it, ऐसा कुछ हो सकता है. How many of you know there is something known as natron lakes in Egypt? natron lake के बारे में किसी कुछ पता है? Does anyone know natron lakes? If no ना, गूगल कीजिए, थोड़ा सा कम से कम याद रहेगा आपको कुछ कुछ. गूगल इट, natron lake. देवांगी, फहद, तारीफ, अब्दुल्ला.
Did anyone get any pictures of Natron Lake? Yes, sir. Yes, it is red, right? So Yes, sir. I think it was And Napoleon. Yes, Tarif. sir, it says that if the lake, it turns the animals into stone when it comes into contact. हाँ 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 हाँ, yeah, that is correct. लेकिन वो उसका रीजन कुछ और है, right? They have some bacteria which are responsible for that, and there is alkalinity there. Okay, so what happens उस वहां पे उस लेक की बात है, and it was I think Napoleon. Okay, Napoleon was with his ministers, and as usual जैसे आप लोग देखिए इंडिया में क्या है, you have नीति आयोग, right? नीति आयोग is responsible for all the scientific endeavors, और जो भी आपके एजुकेशन में चेंजेस आते हैं नीति आयोग से आते हैं. Then you also have institutes such as ISRO, right? So जैसे अभी गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, at that time also जब राजा महाराजा होते थे, then you had some ministers there of the kings and the rulers who were specialists in a particular subject. So he had a scientist with him, and he visited the Natron lakes. Okay, and in Natron lakes he found this reaction to be happening because he found salts, that is calcium chloride and Na2CO3. These are the salts that he found. Then he said that, wait a second, when I have Na2CO3 and CaCl2, I get a reaction in my laboratory, that is it gives us NaCl and calcium carbonate. Then he understood that, okay, fine, it is I am getting Na2CO3 and CaCl2 only because the lake has a very high concentration of NaCl and calcium carbonate. At that particular time, he said that, okay, fine, both of the reactions are possible. That means this reaction is reversible. Then there was a concept of reversible reaction introduced. When you have A plus B giving you C plus D, this type of reaction can be there. Initially, there were few reactions जिनको reversible classify किया गया था. Later on, each and every reaction was classified that it is reversible to some extent. Okay, it is reversible to some extent. Now, right here, first of all, reversible reaction. Right here, reversible reaction. The reaction in which products that are formed can also react with each other. To form the reactants under suitable conditions. Under suitable conditions. Now, right next, attainment of equilibrium. Okay, attainment of equilibrium. Now, there are, अगर हम reactions की बात करें, and you have A, which is forming B. So when A is forming B, इसको हम बोलेंगे forward. Okay, this is forward reaction, and this is backward reaction or the reversible backward reaction. ठीक है? इस convention से ये हो जाएगी. We have forward reaction and we have backward reaction. Forward reaction will correspond to a rate of forward reaction, और backward reaction क्या होगा? Rate of backward reaction होगा. Is this clear? Yes or no, please tell me. जी बताएं. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, when you start only with A, जब आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ A है, at that time forward reaction ज्यादा होगा, right? When only A is present. ठीक है, तो
बी तो है ही नहीं, बी है नहीं तो बैकवर्ड तो जा ही नहीं सकता है, राइट? So you'll only have rate of forward reaction, and we'll say rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction. When rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction, then what is going to happen at this particular time when rate of forward is greater than rate of backward? तो क्या होगा? Forward reaction will happen. Forward reaction, ठीक है? And the concentration of B is going to increase. Correct? Yes or no? है ना? ए से बी बनेगा तो बी की कंसेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। करेक्ट? ये समझ में आया नहीं? ये बताइए। देखिए, जब भी आपके पास ए है तो ए के मॉलिक्यूल्स, एक ही ए नहीं रहेगा भाई, ठीक है ना? यू विल हैव ए, यू विल हैव मिलियंस ऑफ ए, राइट? तो ए के मॉलिक्यूल्स दूसरे ए के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे और वो बी बनाएंगे। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay, ठीक है? So you have many molecules of A which are going to collide with each other and they are going to form what? They are going to form B, है ना? तो जैसे ही आपके पास B की concentration increase करेगी, and as the concentration of B will increase, what is going to happen? B के molecules भी एक दूसरे से टकराएंगे और वो A बनाएंगे, तो रेट ऑफ B स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे क्या होना? इंक्रीज होना। हम ये नहीं कह रहे कि फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। इनिशियली मान लीजिए 100 मोल पर सेकंड, है ना? ए से बी कन्वर्ट हो रहा था, एक सेकंड में 100 मोल ए का बी में कन्वर्ट हो जा रहा था। बी का भी मान लीजिए 10 स्टार्ट होगा, राइट? बिकॉज वी स्टिल हैव मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज रिलेटिवली लेस। व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? ए का ए से टकराने के ज्यादा चांसेस है, बी का बी से टकराने के चांसेस बहुत कम है। ओके, सो वी विल सी दैट स्लोली रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज as rate of backward reaction increases, it will become equal to the rate of forward reaction। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस टाइम हम क्या बोलेंगे? एट दिस पॉइंट वी विल से इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। अब नाउ प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली, ऐसा नहीं है कि ए से बी कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। क्या ये ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि आई एम सेइंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज समथिंग, तभी तो वो बी के बराबर हो गया। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज गोइंग टू गेट जीरो, है ना? दैट मींस स्टिल ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी, बट उतना ही बी क्या हो जा रहा है? ए में कन्वर्ट हो जा रहा है। इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, जी बताएं, इज दिस क्लियर? ये समझ में आया आप लोगों को? आई एम, Yes, sir. है ना? ये मत समझिएगा प्लीज कि ए बी में अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रिएक्शन इज स्टिल टेकिंग प्लेस, बट द अमाउंट ऑफ ए दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी, बी भी उतना ही अमाउंट में ए बना दे रहा है। ओके, सो एट दैट टाइम वी विल से इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नाउ प्लीज रिमेंबर एट दिस पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज कांस्टेंट, इज इक्वल नहीं कहा हमने? क्या कहा हमने? इज कांस्टेंट एंड मे or may not be equal। ठीक है, ये समझ में नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो बताइए, हम समझाते हैं किसी चीज से। All of you understood this? Yes or no? Concentration of A and B is constant, may or may not be equal। Okay, may or may not be equal। Now at equilibrium what happens? At equilibrium, rate of forward is equal to rate of backward reaction। ठीक है, the concentration of reactant and product becomes constant। ठीक है, becomes constant, that means but
ऐसा लिख लीजिए, it does not mean they are equal. कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होना, ठीक है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर है, उतने ही में आके ये लोग रुक गए, ठीक है। इट इज रिएक्टेंट 10 है और प्रोडक्ट 20 है और उतना ही रह रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज कांस्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? यस और नो प्लीज टेल मी। सवाल Yes, लिखिएगा। sir. चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास स्टेटमेंट्स है। ए स्टेटमेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एट इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बी में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन यू राइट कंसंट, इस तरह से जब हम लिखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इट मींस मोलैरिटी लिखते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सी में लिखिए concentration of reactant and concentration of product are constant, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन लिख लीजिए बी इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन लिख लीजिए बोथ ए एंड बी इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन लिख लीजिए ए एंड सी इज ट्रू। बताइए, राइट इन द चैट विच ऑप्शन। Yes, Devangi, correct. Okay, ऐसा लिख लीजिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फिर से। डन। डन गाइस, लिखिए आप लोगों ने क्या ऑप्शन होगा करेक्ट। हिबा आर यू देयर? हिबा, फहद, फहद नहीं है, तारीफ, अब्दुल्ला, आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं? इतना टाइम लगाइए, कहाँ से चलेगा। सारी चीजें लिखाई हुई उसके बावजूद आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विल बी इक्वल, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, नो। रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, यस दैट इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए एंड सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज स्टार्टिंग में ये रेट के लिए है, दिस इज टाइम, this is rate of forward reaction, this is rate of backward reaction, ठीक है। उन्होंने ऐसे दिया हुआ है this is the part where equilibrium has been established, ठीक है। this is first graph,
सेकंड ग्राफ लिखिए। This is rate of forward and this is rate of backward. उन्होंने बोला है ये पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन, ये दोनों रेट के लिए जो दो ग्राफ्स बन रहे हैं दैट इज फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसके बाद ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जरूरत था प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। They are saying this is the part where they have this is reactant, this is product, जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। फोर्थ ग्राफ देखिए। They are saying this is the part जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। See the fifth graph. This is again reactant and product. Okay, this is reactant, this is product, this is concentration. This is the part जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। This is reactant, this is product, this is concentration. ये सारा आपके पास टाइम है। ओके, ऑप्शंस है आपके पास, प्लीज लिखिए। 1 and 5 are true. नेक्स्ट लिखिए। 1 and 2, 3, 1 and 5 only are true। ठीक है, अभी चलिए ऐसे लिखिए 2, 3 and 4 are true। सी में लिखिएगा 1, 2 and 3 are true। डी में लिखिए none of these। चलिए थोड़ा सा टाइम लीजिए इसको। है ना, वर्ड्स में हमने बताया था। ठीक है, तो ट्राई टू, अब आपको यहाँ यहीं पे आपका टेस्ट होगा लाइक कैन यू रिप्रेजेंट दीज ग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप उसको सही सही से वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पे, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या बराबर हो रहा है। देयर आर 3 थिंग्स दैट हम आप लोग कंसिडर करने के लिए बोलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेम, इक्वल जो होता है। उन दोनों के बीच में अगर आपको फर्क समझ में आ गया ग्राफ में, देन इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू गाइस। कांस्टेंट एंड इक्वल में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा देवांगी, कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर? देवांगी ट्राई कीजिएगा। Sir, Yes. because
first and fifth are true, but third can also be there. ठीक है, 1 and 5 ट्रू है। हाँ चलिए आप बताइए क्या लगता है आपको दिवांगी, फर्स्ट वाला ट्रू है? जी, Yes, sir. दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। क्यों ट्रू है बताइए, व्हाई इट इज ट्रू? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्वल है या कांस्टेंट है? Equal. इक्वल एंड कांस्टेंट दोनों ही है वैसे, लेकिन इक्वल ज्यादा यहाँ पे बेहतर होगा ना, बिकॉज इट इज इक्वल। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे बताइए क्या है, ट्रू है फॉल्स है? सेकेंड वाला False. व्हाई? Because rate of forward and rate of backward reaction are not equal, correct? Yes, sir. Not equal to rate of backward reaction. ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या है, मतलब यहाँ पहले देख के बताइए जो भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं दैट इज इक्वल या कांस्टेंट? Constant. टेल मी। बोलिए देवांगी। Constant. इट इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? concentration of reactant and the concentration of product is constant. ठीक है, now what I am teaching, हम true false नहीं बता रहे आप लोगों को, okay, what I'm trying to teach here is to how you are going to translate this graph into words. Okay, क्या चीज देखना है आप लोगों को यहाँ पे? हिबा, फहद, तारीफ, अब्दुल्ला, all of you are understanding this? Yes or no? Please tell me. हिबा आपको आ रहा है? Yes, sir. Okay, हिबा फिर आप बताइए फोर्थ में, बताइए इक्वल है या कांस्टेंट है यहाँ पे? Fourth one. फोर्थ वन Constant. या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इसकी क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम होगा, सही है, करेक्ट? यस और नो? Yes. है ना, ये भी इक्विलिब्रियम होगा। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में इट इज इक्वल एज वेल एज कांस्टेंट, करेक्ट? यस और नो? है Yes. ना, दिस इज रे कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इसमें भी क्या होगा, दिस इज आल्सो ट्रू। तो सिर्फ फॉल्स कौन सा है यहाँ पे, सेकंड वन इज फॉल्स। ओके, व्हाट आर ट्रू? फर्स्ट वाला भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है एंड फिफ्थ भी सही है। सब कुछ क्लियर है अभी? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? यस और नो? हाँ जी बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या देखिए, ये चीज शायद आप लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिटेल में उतना, बट आई विल ट्राई टू गेट यू टुवर्ड्स दिस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। यही काइनेटिक्स का पार्ट है जो कि थोड़ा सा मिसिंग है। काइनेटिक्स थोड़ा सा अगर आप लोग को पता रहता ना, तो फिर इट वुड हैव बीन मच इजियर। बाहर के सिलेबस में आई ऑल्सो टीच IB स्टूडेंट्स, तो IB स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, काइनेटिक्स होता है, उसके थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स आर देयर। थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, काइनेटिक्स बताता है कितना टाइम लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो डायमंड होता है ना, डायमंड से जो ग्राफाइट वाला इक्वेशन है, अगर आप बात कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन इट इज स्पॉन्टेनियस। दिस इज हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं होता है दैट इट इज गोइंग टू हैपन क्विकली। डायमंड इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट टू ग्राफाइट वेरी क्विकली। ओके, सो दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन बाय डायमंड्स। अदरवाइज अगर ये 10 साल के अंदर डायमंड ग्राफाइट बन जाता तो क्या फायदा, राइट? इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट, आई डोंट नो मिलियंस सही ये है नहीं, थाउजेंड्स बोल देते हैं। ओके, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू कन्वर्ट डायमंड इनटू ग्राफाइट, राइट? डायमंड विल गेट कन्वर्टेड टू ग्राफाइट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो दो चीजें हैं जो मैटर करती हैं हम लोग, राइट? वी हियर एज ह्यूमंस वी स्टडी साइंस ओनली टू डू नो, क्या करने के लिए, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ये बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल लग रहा होगा, बट दिस इज द ट्रू थिंग। आप देखिए ना, आप 11th स्टैंडर्ड में क्या स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए? यू स्टार्ट इन फिजिक्स काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, फ्यूचर ही तो पूछते हैं। ये सो नो प्लीज टेल मी। या फिर आपको दिया फाइनल कंडीशन, पूछते हैं इनिशियल कंडीशंस क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सारी चीजें क्यों है? बिकॉज अगर आपको पता है कि आप 30 किलोमीटर पर घंटा जा रहे हैं, तो आप 2 घंटे में कहाँ पहुंचिएगा? सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। वी आल्सो वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, हम क्या करना रहता है, प्रेडिक्ट द फ्यूचर। दैट इज व्हाई वी रीड अबाउट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
ये होगा या नहीं होगा, इफ आई हैव दीज रिएक्टेंट्स देन इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट। फिर काइनेटिक्स आता है, वो बताता है कितना टाइम लगेगा। ओके, तो दोनों चीजें हो गई। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, आपका काम क्या है, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, एंड ईच एंड एवरी गुड क्वेश्चन, जो भी सही अच्छा सवाल बनता है, दैट इज रिलेटेड समवेयर कि आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर। एंड हियर आल्सो वी आर सीइंग द सेम थिंग, इफ आई एम गोइंग टू चेंज समथिंग, है ना, ह्यूमन एक चेंज लेके आएगा तो सिस्टम क्या चेंज लाएगा, ठीक है, व्हाट इज द सिस्टम ट्राइंग टू डू, if I am going to increase the volume, तो सिस्टम क्या करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा देगा, तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ओके, सो थिंक ऑफ दिस चैप्टर इन दीज टर्म्स। खैर चलते हैं रेट के पास अब। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, when I talk about rate of reaction, we have A and we have B, ये दोनों कोलाइड करेंगे and they are going to form C. If the number of collision increases, number of collisions per unit time कर देते हैं, right, per unit time, अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, देन आई कैन से दैट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज। यस और नो गाइस, प्लीज टेल मी। हाँ जी बताएं। इफ द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ टाइम्स ए एंड बी आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ऐसे नहीं चलेगा ना, हाँ ना तो प्लीज बोले ना, व्हाट हैपेंड, हिबा, देवांगी, फहद, तारीफ, अब्दुल्ला, if I am going to collide A and B more times, more frequently, then the rate of the reaction will increase. Yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay, है ना। Now, अब हम लोगों को क्या करना है, we will see what are the factors that is going to increase the probability of collision. What is going to increase the probability of collision? Let us suppose I increase the concentration of A and the concentration of B. दोनों के concentration को हमने क्या किया, I increase the concentration. Now the probability of them colliding with each other also increases. Yes or no, please tell me. Yes, sir. Correct है? Then I will say that okay fine, if I increase the concentration, मतलब क्या है, number of moles, है ना, हम क्या करते हैं सबसे पहले, number of moles, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किया, या फिर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, या फिर आई हैड ए एंड बी इन दिस बिगर वॉल्यूम, हमने नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं किया, हमने वॉल्यूम छोटा कर दिया। अब भी बताइए, नाउ आल्सो टेल मी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज इफ आई डिक्रीज द वॉल्यूम। यस और नो, प्लीज टेल मी। करेक्ट है? Yes. है ना, यहाँ पे भी। तो नंबर ऑफ मोल्स आप इंक्रीज कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, वॉल्यूम को डिक्रीज कीजिए, है ना, एंड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, दिस इज मोलैरिटी, जो आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो वही हमने लिखा है, if you increase the concentration, then also what is going to happen, you can increase the concentration either by increasing the number of moles of the reactant, or you can decrease the volume. Both of the cases, they are going to increase the concentration, and that is going to increase the number of collision per unit time, and that is then going to increase the rate of reaction. Is this clear? Yes or no, please tell me guys. Correct है? अब ध्यान से सुनिएगा जरा, when you had A and B, सुनना है बस, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं अभी तो मत लिखिए, कोई बात नहीं, A and B, और आपको ये C दे रहा है। अगर आप A की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A आल्सो, एंड रेट इज आल्सो गोइंग टू डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अगर B की इंक्रीज करेंगे तब भी रेट बढ़ेगा, A की इंक्रीज करेंगे तब भी रेट बढ़ेगा, बिकॉज द चांसेस ऑफ कोलिजंस आर गोइंग टू ऑब्वियसली इंक्रीज, राइट। दैट मींस हम कह सकते हैं रेट is directly proportional to the concentration of A and the concentration of B. Now let us see what is the effect of stoichiometry, है ना, stoichiometry का क्या effect? If I have 2A plus 3B, it is going to give me C, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, in terms of colliding, आप ना अब बिल्कुल सिस्टम बन जाइए, अब बन जाइए यूनिवर्स, try to think in those terms। आपको अगर कोई दो चीज को कोलाइड करना है, if you want to collide two things, then will you see whether it is A or B, or you will just see them as some sphere which are having some protons and some neutrons, no matter whether it is having 10 protons or whether it is having 11 protons, you are going to collide them. Yes or no, please tell me. Correct hai guys? Yes, so, sir. does the universe distinguish between A and B? No, it does not distinguish between A and B. तो यहाँ पे I am writing 2A, but the universe is thinking there are A plus A, and there are what, B plus B plus B, है ना। जिस तरह से when you had only two reactants, हम लोग के दिमाग में, right, we had in our mind that there were only two molecules, there were only two reactants. At that time we wrote rate is directly proportional to the concentration of A and the concentration of B. Right now universe is thinking कितने हमारे पास, we have 5 things, so they will say rate is
directly proportional to the concentration of A, to the concentration of A, to the concentration of B, to the concentration of B, to the concentration of B. Is this clear? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A to the power of 2 and B to the power of 3. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. हाँ जी बताएं. देवांगी, हिबा, फहद, तारिक, अब्दुल्ला. Yes, sir. Can you see the effect of stoichiometry? Yes. Okay, ठीक. Now, अब हमारे पास रेट भी आ चुका है. इसी चीज को कहा गया है लॉ ऑफ मास एक्शन. जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इसी को क्या बोला गया? लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. अभी हम स्टेटमेंट लिखाएंगे, देन यू आर गोइंग टू राइट इट साथ साथ में, बिकॉज आपने समझ लिया क्या होता है. प्लीज राइट. द रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to the product of concentration terms, raised to their stoichiometric coefficients. For example, if I have A to the power AA, I have B moles of B, where A and B are numbers, okay? And let us suppose I'm talking about equilibrium and just giving C moles of C and D moles of D. In this case, I can write the rate of forward reaction. Okay, क्या लिख देंगे हम? Rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of A to the power A, the concentration of B to the power B, and I will write the rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C to the power small c and the concentration of D to the power D. And since we have proportionality here, I can write forward reaction is equal to K, some constant, A to the power A, B to the power B. And this will be rate of backward reaction is equal to KF लिख देते हैं, उसको KB लिख देते हैं, right? Rate constant. C to the power C and D to the power D. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. At equilibrium अब क्या हो जाएगा? साथ साथ लिख लिया था आप लोगों ने? At equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. The rate of forward reaction is K forward, concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. This is K backward. Oh, यहाँ पे भी हमने F लिख दिया. My bad. इसको change कर लीजिए please. इसको B लिख लीजिए. This will be constant for backward reaction. Concentration of C to the power C and D to the power D. Now, if I write the rate constant of forward upon the constant of backward reaction, forward upon backward, ठीक है? तो forward upon backward क्या हो जाएगा? Backward इधर नीचे है और ये इधर नीचे चल जाएगा. You will have concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon the concentration of A to the power A, concentration of B to the power B. Now, since KF and KB, both of these are constant, we can write it as greater constant K, which is equal to the concentration of C to the power C into the concentration of D to the power D divided by the concentration of A to the power A and B to the power B. This is nothing but equilibrium constant, और यहाँ Kc लिखते हैं because we are writing the equilibrium constant in terms of concentration. कि जैसे Kc होता है वैसे आपका एक Kp भी हो सकता है, which is the equilibrium constant in terms of pressure. This is what equilibrium constant. Constant in terms of concentration. Clear है सबको? ये सुनो please me. Yes, sir. समझ में आया? ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया? Kc वाला. ठीक है? I hope you have already seen this equation.
राइट गाइस? हाँ जी बताएं। देखा तो होगा ना ये इक्वेशन KC इज इक्वल टू, नहीं देखा? Yes, इक्विलिब्रियम sir. कैंसिल करा दे, देखा है ना? इक्विलिब्रियम तो नहीं कैंसिल है ना, आप लोग के सिलेबस में है ना, इक्विलिब्रियम आ रहा है, राइट? स्कूल ने कैंसिल करा दिया आपके? आ रहा है ना? हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, लिखिएगा, यहाँ आता है आप लोग को। चलिए लिख ही लीजिए, है ना, नोट्स पढ़ने में आसानी होगी। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट आपका एल्जेब्राइक प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल प्रोडक्ट है, raised to their coefficient to the product of, ये प्रोडक्ट आपका मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, ओके, अलजेब्राइक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट of reaction raised to their stoichiometric coefficient is constant at equilibrium, ठीक है? This constant is known as equilibrium constant. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। और के आपका दो टाइप का होता है, एक होता है केसी और एक होता है केपी, ठीक है? तो केसी इज इक्वल टू, दिस इज बिग पाई, अच्छा ये बताते हैं, व्हाट इज दिस साइन यूज फॉर, टेल मी, ये साइन किस लिए यूज होता है? Summation. समेशन के लिए यूज होता है। बाकी लोग को पता है? हिबा, देवांगी, तारीफ, अब्दुल्ला, पता है ना समेशन के लिए यूज होता है, राइट? Yes, sir. Yes, है ना? sir. उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए यूज होता है पाई, ठीक है, पाई ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन में टू दी पावर, जो भी इसका पावर हो, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय ये कैपिटल पाई है, जैसे आपके पास ए और ए होता है ना, एक लोअर केस ए और एक अपर केस है, वैसे ही आपके पास पाई होता है, दिस इज अपर केस पाई व्हिच इज यूज्ड फॉर समेशन। वैसे इसको भी क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, और ये भी क्या होता है? सिग्मा होता है, दिस इज लोअर केस सिग्मा, दिस इज अपर केस सिग्मा, ओके, उसी तरह से है यहाँ पे, दिस इज अपर केस पाई व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पावर पी डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर आर ले लीजिए, ठीक है? और केपी होता है क्या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? केपी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ pressure of products to the power of their stoichiometric coefficient, यहाँ पे P, pressure of reactant to the power their stoichiometric coefficient. Done everyone? Yes or no? Please tell me. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए next लिखिए, relation between Kc and Kp.
केसी और केपी में रिलेशन तभी होगा व्हेन यू विल हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। Ideal gas equation says PV is equal to nRT. So we can say pressure will be equal to N upon V into RT. Number of moles upon volume is what? Nothing but concentration. Concentration into RT. This is what? Pressure. Concentration into RT. So for example, if I have PA, तो इसका क्या होगा? Concentration अलग होगा, तो CART लिखेंगे इसको, right? What I will write? I will write CART. So for equilibrium, अगर आपके पास है AA plus BB, this is a reaction which is an equilibrium, giving you CC and DD. In this case, I can write what I will write. First of all, I will write KP. ठीक है, KP is equal to the pressure of C to the power C into the pressure of D to the power D divided by the pressure of A to the power A and the pressure of B to the power B. ठीक है, अब PC को क्या लिख सकते हैं? जैसे PA है ना, PA को CART, तो C को क्या लिख सकते हैं? Concentration of CRT, ठीक है, into concentration of what? Into CRT to the power C, of concentration of D, RT to the power D, divided by the concentration of A into RT to the power A into the concentration of B, RT to the power B. Okay, now यहाँ पे concentration of C, concentration of D, concentration of A, concentration of A and B, इन सबको अलग कर लेते हैं. You will have concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A and concentration of B to the power B, multiplied by यहाँ पे आपके पास RT की power C, RT की power D upon RT की power A and RT की power B, right? RT की power B. Now, what is this? Concentration of products upon concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient. यही क्या है आपके? This is Kc into RT. यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग. RT will be common, and then you will have C plus D, right? Minus A plus B. ना जो न्यूमरेटर में that will be in positive, जो डिनोमिनेटर है मल्टी आप यहाँ पे minus A minus B हो जाएगा, right? So you'll have C plus D minus A plus B. Is this clear यहाँ तक? Yes or no, please tell me. Correct है guys? Yes, sir. है ना? अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा एन जी. What is this? C plus D, the number of moles of gases in the products, minus A plus B, the number of moles of gases in what? In the reactant side. अब हम क्या लिख सकते हैं? Kp is equal to Kc into RT to the power delta Ng. Clear guys? Yes or no, please tell me. Delta Ng is the difference of number of moles of gas. Difference नहीं लिखिए, change लिख लीजिए. Change in number of moles of gas in products and reactant. ठीक है, तो delta Ng is equal to the number of moles of gas in product minus the number of moles of gas in reactant. चलिए इसको छापिए.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. हाँ जी बताएं, देख लिया सबने? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एन जी आपके पास, इट कैन आइदर बी greater than 0. Greater than 0 होगा, that means product has more number of gases या less number of gases? बताइए, more moles of gases या less moles of gases? हाँ जी बताएं, बताइए। एनजी पॉजिटिव कब होगा ग्रेटर देन 0? क्या ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स वाला ज्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट वाला ज्यादा होना चाहिए? करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, खुद से लिखिएगा आप लोग, हम नहीं बताने वाले, ठीक है। प्रोडक्ट हैज डैश मोल्स ऑफ गैसेस, खुद से लिखना है। डेल्टा एनजी इज, जब लेस देन 0 है तो प्रोडक्ट हैज डैश मोल्स ऑफ, अब जो लोग आंसर देंगे उनको हम बता देंगे उन्होंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। आपका पहला वाला सही है देवांगी, ओके। सेकंड वाले में खुद से लिख लीजिए कितना आएगा। एंड जब डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट हैज डैश मोल्स ऑफ गैस। ए बी एंड सी, ठीक है। आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, 3 मिनट, हम 2 मिनट समझिए इंतजार करेंगे। जल्दी आंसर ए में, हाँ ठीक है, यस करेक्ट, वेरी गुड तारीफ, दैट इज करेक्ट। अरे क्या लिखा है आपने, अच्छा अच्छा स्मॉल एल है, हाँ ठीक है, करेक्ट फैज, ओके गॉट इट। व्हाट अबाउट अदर्स? हिबा, अब्दुल्ला, हिबा आप कर रहे हैं? यस हिबा, हिबा गेट्स साइलेंट नाउअडेज, व्हाट हैपेंड? हिबा So कैन I'm यू not नॉट हियर? जी बताइए। so I'm not sure. यू आर नॉट श्योर? Yes. नहीं नहीं नहीं, श्योर होना पड़ेगा आपको, कितना टाइम लगेगा बताइए, सिंपल सा चीज है। शोर हो रहा है, आप जहाँ पे बैठी हैं कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप, फिर बताइए। हिबा, आई होप आपने मतलब ईयरफोन्स कम से कम लगाए हुए हैं, राइट? इस देवांगी करेक्ट। हिबा थोड़ा तो बताइए आप क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, या फिर कुछ नहीं आ रहा। डेल्टा एन जी आपको फॉर्मूला पता है, यस और नो, टेल मी। यस हिबा, Number of moles of gas equals number of moles of gas in product minus number of moles of gas in reactant. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पॉजिटिव कब होगा? आप दोनों को एक नंबर दीजिए ना, ऐसे नहीं आता ना जब, तो हम बता रहे हैं, देखिए आई एम जस्ट गिविंग यू द वे, आप ये बाद में इन सब चीजों को यूज Yes, sir. कीजिएगा, ओके। ये बात कर रहे Yes. हैं ना, आप नंबर दीजिए इनको, कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, कब जीरो हो रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। गिव देम नंबर्स, एटलीस्ट इतना कर लिया कीजिए व्हेनेवर। कभी कभी ये काम नहीं करता है, हिट एंड ट्रायल इसको बोलते हैं ना, समटाइम्स इट डजंट वर्क, बट स्टार्ट तो करने के लिए सबसे अच्छा है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो स्टार्ट यहाँ से कीजिए। देवांगी आपका सही है। हिबा,
यस वेरी गुड, आ गया ना? ठीक है, ऐसे हिम्मत नहीं Yes, हारना है, yes. कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, वी हैड द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या था बताइएगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताइए आप लोग, आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी है ना। इन दिस केस वी कैन राइट ना, इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, आर आपकी आर का वैल्यू होता है 0.082 होगा या फिर 0.083 होगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज गिवन। टेम्परेचर आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर आपका जो 0 डिग्री होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0 डिग्री आपका होता है 273, 273 यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा आपका कितना 298 है ना, अप्रोक्सीमेटली 300। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, राइट, 300 इंटू आरटी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 100 ही होगा जनरली। अगर आपका 100 केल्विन से नीचे टेम्परेचर जाएगा तब जाके, 100 केल्विन से नीचे टेम्परेचर जाना नॉर्मल कंडीशन से बहुत ही मुश्किल है। 100 केल्विन से समझ रहे हैं आप, -100 अगर चला गया, -100 तो बहुत जनरली जाता नहीं है ना केमिस्ट्री में, वी आर गोइंग टू हीट द थिंग्स अप ओनली, ओके। तो व्हेन आई एम सेइंग हियर केपी क्या होगा इस केस में, इट विल बी ग्रेटर देन केसी, ठीक है। यहाँ पे व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो ये आर टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस केस में केपी केसी के बराबर हो जाएगा। एंड इन दिस केस व्हेन डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, तो आर टी का रेसिप आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड दैट इज व्हाई केपी विल बी स्मॉलर देन केसी, ठीक है, प्लीज लिख लीजिए। राइट नोट, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। आर आपने ना वहां पे भी यूज किया होगा थर्मोडायनेमिक्स में भी, 8.314, राइट, 8.314 यूज किया होगा ना, जूल्स पर मोल पर केल्विन, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम लोग एनर्जी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लीटर एटीएम। इन दिस टर्म्स आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम per Kelvin per mole if pressure is in ATM, ठीक है। अगर एटीएम में प्रेशर दिया तो आप क्या यूज कीजिएगा, R is equal to 0.0821, and if it is given in bar then you are going to use 0.0831 liter bar per Kelvin per mole if pressure is given in bar। Done everyone? Yes, please tell me. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो होते हैं देयर आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है होमोजेनस इक्विलिब्रियम, और एक होता है हेटेरोजेनस। Okay, in homogeneous equilibrium all species are in same phase, and here
species are in different phases. डन। फेज का मतलब समझ में आ रहा है? फेज का मतलब होता है, फेज आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर एक्वस फेज भी हो सकता है, राइट? जो भी कंडीशन है आपके पास रिएक्टेंट, ऑल स्पीशीज का मतलब रिएक्टेंट में सारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में सारे रिएक्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग आर इन व्हाट? सेम फेज। एवरीवन गॉट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. यहाँ पे एक नोट लिखिएगा। पांच मिनट दूसरी क्लास है, हाँ ठीक है, बस हम ये नोट लिखा के खत्म करते हैं, ठीक है? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स आर टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन होता है, ठीक है ना? वन लेते हैं इसको। क्यों लेते हैं? मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, कंसंट्रेशन का क्या होता है? नंबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर इफ यू हैव दिस कंसंट्रेशन और ये कुछ रिएक्ट हो गया, बस ये कितना बचा? इतना बचा, राइट? तो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन सी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हैज आल्सो डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। तो अगर सॉलिड का मतलब कोई, अगर आप किसी प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक मेजरेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज होगा तभी तो फायदेमंद है। प्रेशर अगर चेंज ही नहीं होता कभी किसी का, तो प्रेशर का हम लोग बोलेंगे नहीं ना उसको कि ये प्रॉपर्टी जिसको मेजर करना चाहिए। टेम्परेचर अगर चेंज ही नहीं होता तो हम नहीं बोलते। कंसंट्रेशन लिक्विड की और कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम में, एंड कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एक सेकंड, सॉलिड्स एंड इवन प्योर लिक्विड्स, ये भी लिख लीजिएगा, एंड प्योर लिक्विड्स, ठीक है? प्योर लिक्विड का भी सेम केस है। अगर आपके पास इतना वॉल्यूम है, कुछ रिएक्ट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा, वॉल्यूम भी घटेगा, राइट? तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है ना, मतलब उसको मेजर करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। ओके, सो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कंसंट्रेशन इज नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? वो आपके लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी का मतलब ही तो ये है ना कि कुछ चेंज होना चाहिए। इफ इट इज नॉट चेंजिंग तो फिर क्या फायदा उसको मेजर करके, है ना? वी आर डूइंग सम चेंज और वो चेंज आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए वहां पे, बट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स अब जब डिक्रीज करेगा तो उस पर्टिकुलर सॉलिड का वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, सो दैट इज वाई कंसंट्रेशन टर्म सॉलिड और लिक्विड के लिए होता ही नहीं है। तो क्या जीरो कर दे? नहीं, उसको लेंगे ही नहीं। एक एग्जांपल लिख के हम बस खत्म करते हैं क्लास को। CaCO3 सॉलिड है आपके पास, CaCO3, this is in equilibrium with calcium oxide which is solid and carbon dioxide which is gas। तो यहाँ पे Kc क्या हो जाएगा? concentration of CaO into the concentration of CO2 divided by the concentration of what? CaCO3। but by definition calcium oxide and calcium carbonate, both of these are solid, दैट इज वाई उनकी कंसंट्रेशन को क्या मानते हैं? वन मानते हैं। कंसंट्रेशन उनका कुछ होता ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ डिफाइन करना ही बेवकूफी है। ओके, दैट इज वाई विल राइट Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जो चेंज हो उसी को मेजर करके फायदा ना। कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू CO2, ये दिस इज इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन। चलिए इतना लिखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड विल मीट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद हम